average package has increased Hmm. by 1 or 2 lakhs this year. Oh, Again, nice. yeah, average package has increased, and it will increase, I think, in the next year also, seeing the scenario, because our batch is full placed. Hmm. Like in December, they got placed, and the placement process will most probably close this month. SIBM Hyderabad, Sarika ma'am, please do the needful. Give us a little idea कि इसकी कट ऑफ काफी कम है एंड बच्चों हमारे एक मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है, बट इंडिया में है परसेप्शन ड्रिवन है. मैंने अभी एक बच्चों का इंटरव्यू करा, 86 परसेंटाइल का बच्चा है वो, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, कैट के थ्रू वो गया भाई, 15 लाख की जॉब लगी उस बच्चे की एक्सेंचर में. बहुत सी बात है, बट तो परसेप्शन ना वो परसेंटाइल का है, परसेंटाइल छोटा तो कॉलेज छोटा, ऐसा नहीं होता. सो सारिका, आई रियली वांटेड टू गिव अस द ब्रूटल रियलिटी, गुड स्टफ बैड स्टफ बोथ. ठीक है, या गो अहेड Yes. प्लीज. So yeah, as sir mentioned, the cutoff is like 55 to 60. हाँ. But the quality of company and the quality of roles that they provide here, that is, I think that is very good. If I compare tier 3, tier 2, matlab colleges in our league, if I compare that, then according to that, the profiles and the package both are very good. The companies that are mentioned here, they have come to the campus. ANZ has come this year. This was their first time. Yeah. HSBC Bank has come this year. Again, they have offered a good package and a good role also. So overall, I think for finance and marketing, this is a very good college, like a go-to. You can go. Like the Right. faculty is also good. Like I think if you like going through the placement process and everything, I feel that in whatever specialization you are, if you have that level of knowledge, if you have studied properly, then I think you'll be able to ace the placement process. So that factor is very important. So keeping the knowledge factor also in mind, I think the faculty is good for finance and marketing both. So anyone going for that can go. Average package has increased by 1 or 2 lakhs this year. Again, nice. yeah, average package has increased, and it will increase, I think, in the next year also, seeing the scenario, because our batch is full placed. Like in December, they got placed, and the placement process will most probably close this month. So yeah, everyone here is placed. Any idea about the highest, Sarika? Yeah, highest is 17, around this only, this figure only. Okay. Yeah. अच्छा, so the good thing is that कि अगर आपका हाईएस्ट इतना है और आपका 10 तक आता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को 9 9.5 के ऊपर ही लग रही है जॉब. Yes, 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 yes. सही बात है. दूसरी बात ना, यहाँ पे मैं देख रहा था प्लेसमेंट में फ्रेश विस्ता ना, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं ना यूट्यूब पे अच्छे से, फ्रेश विस्ता एक ऐसी कंपनी है जो SIBM पुणे भी जाती है, जो IIM में भी जाती है, विच इज IIM रांची वगैरह वगैरह में भी जाती है. फ्रेश विस्ता इज अ फैबुलस कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. वो NMIMS में भी जाती है, IMI में भी जाती है, वो KJ सोमा में भी जाती है, वो नेटिव वगैरह में भी जाती है. सो ऑलवेज रिमेंबर, it is all about the opportunities, developing your resume according to the opportunities. तो अगर आप फ्रेश विस्ता में जाते हो, what a beautiful role they give. Shanky can tell you more about that. भाई वैल्यूएशन की प्रोफाइल है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की प्रोफाइल है, काफी बढ़िया करते हैं लोग, काफी बढ़िया करते हैं, राइट. सो आई रिमेंबर द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट आई वाज रनिंग, जहां पे हम कंसल्ट का काम करते थे. आई हैड कपल ऑफ गाइस फ्रॉम ट्रेस विस्ता. इनकी नॉलेज लेवल अलग होती है. ट्रेस विस्ता का एक मार्क है मार्केट में कि भाई अगर आप ट्रेस विस्ता में काम करते हो, आप हार्डकोर फाइनेंस काम कर रहे हो. आई एम रियली हैप्पी, सारिका, to see Trace Vista coming on the campus. They must be giving a good package also, right? Yeah, it has given one of the highest packages in our institute, Trace Vista, and they have given roles like investment services for our nice. campus. That's Yeah. nice. Cool. What about marketing? How's marketing doing in Hyderabad? Marketing is also doing good. I think the average is I think somewhat I can say 1 or 2 lakhs less than finance, but still they are doing great with the roles and the companies, everything. So the first ones to get placed in our batch of finance and first finance and then marketing only. So would you agree अगर मैं कहूँ कि अब जहाँ तक SIBM हैदराबाद का सवाल है, it's more into the fin kind of a thing now, you know, उसका एक अपना specialization, because सिम्बी का वही फंडा है. अगर आप देखोगे SIBM पुणे का छोड़ने के बाद HRD का अलग है, IB का पोजीशनिंग अलग है,
SIDTM का पोजिशनिंग अलग हो रहा है, देन SIMS का पोजिशनिंग अलग है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन मेरे ख्याल से. So if you are up for the game, guys, Hyderabad is a fantastic choice for finance. अपनी प्रोफाइल पे काम करो, अपनी रेज्यूमे पे काम करो, ठीक है. I'm gonna take a pause now. Sarika, I want you to kind of go ahead and let us know how's the campus, how's the student quality वहाँ पे कैसे है, please. Yeah, so the campus, as I was talking about the faculty and all, I'll talk about. So the quality of teaching is good. I'll talk about finance and marketing also. I know for HR also it's good. So अच्छा. someone was asking a question here. I saw that is it good हम्म. for HR? So for HR and operations also it's good. I हम्म. think their placements are also doing good. But I would still place Yeah. finance, marketing, Marketing HR, and and then operations. operations. Yeah. Fabulous. So that would be the, yeah. ऑल राइट जी, ठीक है. थैंक यू सो मच सारिका. अच्छा था वो. 55 to 60 भाई आपका कट ऑफ है, ये आपके सामने है. 60 पकड़ लो. अगर आपको 60 है, डेट अगर ओपन है, अप्लाई कर दो. कट ऑफ फॉर एसी कैटेगरी 40 है, एसटी 15 है, डीए इज 20, कश्मीरी मैग्नेट्स इज 58. as you said 10 lakhs per annum is the आपका एवरेज पैकेज. आरओआई आपको नहीं देखना है. आरओआई काफी स्टूपिड कंसेप्ट है. अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप सयाने बच्चे हो, याद रखो आप जिंदगी में 20-25 साल काम करोगे, आरओआई मैटर नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आरओआई में मत पढ़ना. बट अगेन वो आपका कैलकुलेशन है, वो आपका फाइनेंशियल सवाल है. बच्चा लोग, आप लोग देख लो